reference. The first all parameter in the Python language are passed by reference. It means that if you change what a parameter refers to within a function, the change also reflect back to the function. माने हमें फंक्शन भीतर को जहाँ वैल्यू दबा सेटा हमर फंक्शन ने रिफ्लेक्ट बैक हबो. सपोज एठी हमें पास करे कोन ना 10 20 we are passing 10 20 30 1 2 3 4 नहीं हमें एठी पास करबा कोन ए देखो माय लिस्ट 10 20 30 एटा पास करले तापर हमर फंक्शन रहला चेंज मी फंक्शन ने माय लिस्ट को एज ए पैरामीटर मु दे दे तरे 10 20 30 एठी के आसी गला तापर मु एठी लिखली कोन माय लिस्ट डॉट अपेंड रो काम होला जो भी एलिमेंट थिवो तारा लास्ट पोजीशन में आ किछि वैल्यू से ऐड कर देला माने 10 20 30 रहिला ता जगह पुनी 1 2 3 4 एठी ऐड कर देला तापरे हमें एठी यूज करले माय लिस्ट 10 20 30 एटा में जेतरा पास करूचे एटा एठी ऐड हे कि मते एठी शो करला माने फंक्शन भीतर भी मते रिफ्लेक्ट करला 10 20 30 1 2 3 4 फंक्शन बाहर भी जेतरा मु बाहर करबी से देखेबो 10 20 30 1 2 3 4 बुझी पाइलो शिवानी पास वाइज वैल्यू नहीं है ना माने पाइथन रे कोडे कहलो हां पास वाइज वैल्यू अछि नेक्स्ट टाइम यदि करबो एठी हमें अपेंड यूज करी करले अपेंड कले कोन नाम ता भी हमें रिफ्लेक्ट करबा फंक्शन बाहर भी से आसीबो ए वैल्यूटा ठीक गला अपेंड हैला तेनु वैल्यूटा एठी शो करला तापर पुनी फंक्शन बाहर भी से रहला तापर ए प्रोग्राम रे कोन हबो ना पास बाय रेफरेंस रे कोन हैला ना मटी माय लिस्ट पास करियो 10 20 30 तो 10 20 30 एटा हला मोर लिस्ट ता मु फंक्शन एठी कॉल कली चेंज मी फंक्शन ए लिस्ट को एज अ पैरामीटर पास कली ए जो 10 20 30 एठी गला पर एठी मु रीइनिशियलाइजेशन कर देली आ भीतर डिफरेंस कोन मु एठी अपेंड कली माय लिस्ट डॉट अपेंड एठी मु डायरेक्ट एठी इनिशियलाइजेशन कर दोची तो ए जो वैल्यूटा हमर एठी गला फंक्शन ने कोन हैला ना से वैल्यूटा चेंज हे गला बुझियो एटा होची हमर changes passed to the list the would assign a new reference in a my list माने एक्चुअली my list रा वैल्यू थिला 10 20 30 फंक्शन को गला फंक्शन आसीला परे एठी मु आउथरे रीइनिशियलाइजेशन कर देले तो वैल्यू इनसाइड द फंक्शन कहीं जो चेंज हे गला आउटसाइड द फंक्शन देखिला 10 20 30 इनसाइड फंक्शन ने देखिला 1 2 3 4 आउटसाइड फंक्शन ने देखिला 10 20 30 देखिबो एठी किंतु कोन हला ना में जेहेतु अपेंड यूज करी जे तो जो 10 20 30 एठी पास करले माय लिस्ट रे एठो आसिला एठो आसी के अपेंड हे गला अपेंड माने लास्ट एंड रे जॉइंट हे गला माने 10 20 30 तापर 1 2 3 4 हे गला जॉइंट हैला परे जहां भी रिफ्लेक्ट हैला इनसाइड फंक्शन आउटसाइड ऑफ फंक्शन ने भी शेयर रिफ्लेक्ट होबो ओके आउटसाइड फंक्शन ने भी सर स्टार्टिंग कहबे एटा प्रैक्टिकल हिम कहू ये प्रोग्राम टा हिम कहू यार प्रैक्टिकल कोन सर एक्चुअली एबे मैं जॉइन करली त सेट में पछ हां एटा तो प्रैक्टिकली हम देखू छी तो एटा 10 20 30 ए जो अपेंड जेहेतु हमें यूज करले ए वैल्यूटा मते एठी शो करला तापर एठी मोर कोन हला ना जेहेतु अपेंड नहीं जो भी वैल्यू हमें एठी दोचे ए जो 10 20 30 गला लिस्ट रे एठी स्टोर हला परे फंक्शन ने गोटे वैल्यू रही गला फंक्शन ने जहां भी हमें चेंजेस करिवा सेटा हमर फंक्शन भीतर किछि चेंजेस होबनी एटा हमर कोन हो फंक्शन बाहर चेंजेस होबो तो एटा देखि दवा एटा होची बिना अपेंड कीवर्ड रे हमें यूज करिवा तो इनसाइड द फंक्शन एंड आउटसाइड द फंक्शन डिफरेंट वैल्यू रहिबो माने फंक्शन भीतर हमें जहां भी चेंजेस करिवा एटा रिफ्लेक्ट होबनी तो ये जो 1 2 3 4 मुझे 10 20 30 पास कर ली
एटी स्टोर हला एटी स्टोर हला परे तापर पैरामीटर भीतर को आसीबो पैरामीटर वैल्यू भीतर एटी किछि रिफ्लेक्ट हेलानी कारण हम एटी हम रीइनिशियलाइजेशन कर देले 1 2 3 4 तो फंक्शन भीतर किछि चेंजेस हेलानी तो फंक्शन भीतर तार लोकल वेरिएबल एटी देखेला तापर एटी मोर जेतला माइन लिस्ट टा पास करूची 10 20 30 एटा फंक्शन बाहर अछि तो फंक्शन बाहर जो वैल्यू अछि से शो करला किंतु प्रीवियस जो ए प्रोग्राम रे कोन आसीबो एटी हमें अपेंड यूज कर देले सर आपण पॉज रे जाइतले कोन हिची मुकुल जी आपण किस समय पॉज जाइतले तो एटा फर्स्ट प्रोग्राम करूजंती या आ पूर्व आ गुडे किछ करथिले मु पॉज ही नहीं तो मु तो चले जी प्रोग्राम सर मते पॉज देखुला से एटा फर्स्ट प्रोग्राम कि ना पूर्व आ गुडे किछ करिसंती मु दीटा प्रोग्राम देखो छी स्लाइड रे ए प्रोग्राम टा देखो छी और एटा जोटा तुमको एबे डिस्क्राइब करूथली सर से जो डेफ चेंज मी से माइली से सेटा ही रन करछन तबे जुपिटर रे ना ता पूर्व आ गुडे किछ भी रन करथिले से सिया पचाछ ए प्रोग्राम टा रन करथले बर अच्छा ना सेटा मते से देखा लंदा तलटा ही देखुतला से ऊपरटा टी कहबे आतरे ए प्रोग्राम टा मु एठी कहि छी तुमको ए जो प्रोग्राम टा कहउतले ए गोटा को दटला चेंज मी फंक्शन रहिला एटा 10 20 30 एठी पास कला भीतर एटा भीतर किछि रिफ्लेक्ट 10 20 30 आमे जो पास करूचे एटा माई लिस्ट को आसिला माई लिस्ट रे आसला परे एठी जो एठी आमे आउथरे सेही वेरिएबल टा को रीइनिशियलाइजेशन करि देले इक्वल्स माने आमे आउथरे रीइनिशियलाइजेशन कले फंक्शन भितरे जहा वैल्यू अछि से वैल्यू प्रिंट कला 1 2 3 4 फंक्शन बाहर अछि 10 20 30 तो से जहा वैल्यू अछि एठी शो कला फंक्शन भितरे गोटे वैल्यू रहिला फंक्शन भितरे जहा भी आमे चेंजेस करिवा आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ने सेटा हमको रिफ्लेक्ट कला नै किंतु एठी कोन हला एठी हमर चेंजेस रहउछि एठी हमें यूज कले कोन ना अपेंड यूज कले दिस प्रोग्राम वी आर यूजिंग अपेंड एठी हमें अपेंड यूज कले अपेंड माने ई जहा भी एलिमेंट हमें पास करिवा तार लास्ट पोजीशन आ किछि वैल्यू ऐड हे जिवो अपेंड यूज कले फंक्शन भीतर जहा चेंजेस हला एठी बाहर भी चेंजेस हबो बुझियला ये से ऊपरटा रे मन जो थिला सेटा खाली अपेंड यूज ना तो डायरेक्ट जेति थिला सेति कोई प्रिंट होतला हां से जो अपेंड यूज करले जो जेतको प्रिंट हबो माने सेटा कोन माने हम किछि नंबर पुट करिवा अपेंड परे ना एटा आपे आपे ही जा नंबर प्रिंट हो एमती हमें लिस्ट टा पास कले आपे आपे केमिति जीवो हमें लिस्ट पास कले ना 1 2 3 4 पास कले आपे आपे अच्छा अच्छा हां यस next global versus local variable that is defined inside a function is called as the local scope and defined outside of a global scope when you define a variable inside a function it is called as the local variable when you define a variable
outside of the function it is called as the global variable. If you see here, this program total is equals to 0, so it is called as the global variable. But the variable that we define inside a function, okay, so it is a local variable, this total. So here total is a global, here total is a local. So two variable is having a same name, but it is defined, this total is defined outside of the function, so it is called the global. Here we define as a local variable. Okay, बुझेला local global. Yes, sir. So total is equals to 0. Then we define a function def sum function, argument 1 and argument 2. Print see that. So sum 10 and 20. When I pass 10 and 20, then 10 and 20 is stored in argument 1, argument 2. It is added the number 10 and 20. It return you inside a function 30. But in outside of the function, the value is showing, this value is showing you total is equals to 0. This value is stored. Okay. सर बुझेलानी ग्लोबल और लोकल जानिछ तुमे ग्लोबल माने होची ग्लोबली डिक्लेयर हो, लोकल माने होची फंक्शन भितर जो वेरिएबल हमें डिफाइन करिवा सेटा को आजिबो लोकल वेरिएबल. एठी हमें फंक्शन टा को कॉल कले 10 एंड 20 कॉल कले 10 एंड 20 जते बडे फंक्शन टा को हमें कॉल कले एठी पैरामीटर अछि आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2. तो ये 10 टा आर्गुमेंट 1 ने स्टोर हला 20 टा आर्गुमेंट 2 रे स्टोर हला दीटा नंबर एठी ऐड हला एठी रिटर्न कला मते 30. एई जो एठी दीटा वेरिएबल हमें डिफाइन करिसे गोटे फंक्शन बाहर डिफाइन करिसे गोटे फंक्शन भीतर डिफाइन करिसे फंक्शन भीतर जो डिफाइन करिसे जहाँ चेंजेस हला सेटा आउटसाइड रे जो टोटल हमें डिफाइन करछे एठी किछि रिफ्लेक्ट हैला नै कारण फंक्शन भीतर जो टोटल टा डिफाइन हेछि तार स्कोप टा केवल आ भीतर लिमिटेड रहिला से ता बाहर को आसी पालानी से वैल्यू टा आ फंक्शन बाहर हमें जेहेतु 0 डिफाइन करिछे ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू एठी 0 देखेला बुझेला. हाँ सर. So inheritance concept already we covered that inheritance part. Now I will show the inheritance concept that already we learned yesterday. Now for you know that the inheritance is of three types. One is single inheritance, multiple inheritance and multi-level inheritance. In single inheritance, one child class derive its set of attributes from one parent class. In multiple inheritance, one child class derive its set of attributes from more than one parent class. माने सिंगल इनहेरिटेंस से कौन हम गोटे चाइल्ड क्लास गोटे पेरेंट क्लास रो फंक्शनलिटी को कॉल करिवो
मल्टीपल इनहेरिटेंस रे गोटे चाइल्ड क्लास मोर देन वन पेरेंट क्लास रो फंक्शनैलिटी कॉल करिवो मल्टी लेवल रे जोटा कि हमर हेरिडिटरी रिलेशनशिप कहबा माने चाइल्ड चाइल्ड पर पेरेंट पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट दैट इज कॉल्ड द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. So now how to pass the inheritance in Python? For passing the inheritance, suppose if you see here class A, class B, it is a two class we define here. Then class C is equals to A comma B. That means what? C is a child class, A and B is called as the parent class. Okay, so C class derive the set of attribute. माने C class टा कौन करिवो? A class और B class रा सबो attribute टा को एठी कॉपी करिवो. Okay. एटा होची हमें इनहेरिटेंस पास करिवा पाइथन रे. इट इज द वे ऑफ पासिंग इनहेरिटेंस. जदि हमें इनहेरिट करूचे ताको हमें ब्रैकेट भीतर एठी पास करिवा. गोटे क्लास ले गोटे क्लास ए क्लास देन ब्रैकेट एन दीटा क्लास ले ए कॉमा बी मल्टीपल क्लासेस ले हमें कॉमा देके इनहेरिटेंस पास करि परिवा. So how to pass this inheritance? I will give one example. So we define a class animal, then function is def speak function. Okay, then class dog, it is extend from animal, then it is contain the function bark. माने class animal भीतर गोटे function रहला speak function, dog भीतर गोटे function रहला bark function. Okay, but dog class is extends from animal. Dog class टा animal class to inherit ହେଇଛି by inheritance pass କରାଯାଇଛି. Means dog is your child class, animal is your parent class. Then D is equals to dog, then D dot bark, then D dot speak. माने एठी मु dog class ର object बनेली D through रे मु bark function को call कली माने child class ର function को call कली. Then as we are passing a inheritance through the child class object, you can call the function of parent, then D dot speak. And when I run the application, we're showing you dog barking, then animal speaking. Okay, understood? Shivani? Yes, sir. Hello, Ankita? Then D is equals to dog. तो एठी मो ऑब्जेक्ट बनेली डॉग क्लास रो. तापरे ए डॉग क्लास रो ऑब्जेक्ट रे मो बार्क फंक्शन को कॉल कली. ए फंक्शन टा कॉल हैला. ओके, देन ए डी ऑब्जेक्ट रे मो स्पीक फंक्शन को कॉल कली. स्पीक फंक्शन को कॉल कले मते देखेला एनिमल स्पीकिंग. ओके, बुझियला? ମାନେ ଆଗ ଡଗ ରୁ ତାପରେ
हेलो सर सर आपनकर नेट प्रॉब्लम अछि बते ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ହଠାତ୍। ହଁ हां हां म्यूट थिला ପରେ ଦେଖିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡଗ୍ କ୍ଲାସ ର ଅବଜେକ୍ଟ ବନାହେଲା ଡି ଡଗ୍, ଏଟା ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ର ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଡି କ୍ଲାସ ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ରେ ଆମେ ବାର୍କ फंक्शन माने सेही क्लास रो फंक्शन टाको कॉल कले। आज वी आर पासिंग ए इनहेरिटेंस, देन देयर इज नो नीड टू कॉल द स्पीक फंक्शन। स्पीक फंक्शन माने पेरेंट क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेवा दरकार नहीं, हमें चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें डायरेक्टली स्पीक फंक्शन को कॉल कर परिबा। एटी डी डॉट स्पीक कले मोर पेरेंट क्लास फंक्शन टा भी एटी शो करला एनिमल स्पीकिंग। ओके सर सर माने डॉग रो अगर सर डॉग रो बार्क टा कॉल हैला तबरे बार्क रो से जो माने स्पीक टा माने से ऊपर को सेटा जिबा ऊपर जे कि स्पीक टा को सेटा कॉल कलो। नहीं, इनहेरिटेंस से कौन हुए ना, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट थ्रू रे तुम्हें पेरेंट क्लास रो फंक्शनैलिटी को भी कॉल करि परिबो। तने सेंति ऊपर थ कि हम एटा डी डॉग स्पीक आगो लिखले भी से आगो देखेबो कोन एटा एनिमल स्पीकिंग देखेबो। हमें चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट थ्रू रे पेरेंट क्लास रो फंक्शनैलिटी को कॉल करि परिबा यदि हमें इनहेरिटेंस पास करू से। बुझियला? हां हम्म Then overriding method. Overriding method means if you define a method in a function, what I say, if you define a method inside a parent class, same function or same method is used in the child class, but having different functionality. Then it is called the overriding of method. Overriding method is saying that the parent class function is redefined or it is present in the child class within the new functionality. So we define a method like my method, it is a parent class function, and that same function used in the child class, okay, but having a different functionality. It's just like that, you can say we are adding the new feature in a updated software. When you update any app, when you update any application, so you can see that the software is updated and the new feature is added over there. So that is called as the overriding. So overriding concept is saying that the same function is used in a parent or child, but parent class function is redefined or it is added in the child class function with a new functionality. Like when you convert the Windows 7 operating system to the Windows 8, that means some features are lot of like 80% features are same in the Windows 8. If you compare to the Windows 7, some kind of additional look and feel is added over there. Okay. So if you see this example, we define a class parent, and we have a function my method. My method function is present. Then in class child, same function is used, but here it is showing you calling parent class, here it is showing you calling child class. Same function is used in the parent and child, but its functionality is different. If you compare Windows 7 is a parent, Windows 8 is a child, both are using, both functionality is same to operate the hardware or to operate a system, but uh, their functionality is different. Okay, like
We define a animal speak function, class dog animal, then we are defining a speak function here. Same function we are using. Now we are creating a object of dog class. Then when you call the speak function, it is called the speak function of child. ମାନେ child class ର speak function टाକୁ से call करिवो. तापर parent class ର speak function टाକୁ call କରିବାକୁ हेले हम एठी यूज करिवा animal dot speak then self. Self is the default parameter we have to pass in a function. Animal dot speak, that means what? By one object we are calling the two function. माने हमें child class रा object बनेले से object थ्रू रे हमें parent class रा भी function call करि परले, child class रा भी function हमें call करि परले. It's showing you speaking and barking. Okay. से जो एनिमल डॉट स्पीक लिखले बोली चाइल्ड प्लस पेरेंट दीटा को कॉल ही परला ने animal dot speak लिखला बेल को एटा ही कॉल कला. हमु d dot speak लिखला टू पहले पेरेंट को कॉल करला. अच्छा अच्छा d dot speak लिखले ए फंक्शन टा कॉल होला. ए फंक्शन टा कॉल हेले से ऑटोमेटिक ए पेरेंट क्लास फंक्शन टा कॉल करिवो. एटा को कॉल करिवो.